तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, उसके बाद से हम डिफाइन करेंगे मोहर सर्किल के बारे में। इसके पहले हम जान लेते हैं स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस जो आपके सामने प्रदर्शित है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। हम एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करते हैं जो क्यूबिक बॉडी है। अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। वैसे हम यदि बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ भी कहीं एक्ट होता है तो फेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है, और फेस के पैरेलल जब कोई स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। जब हम मोहर सर्किल कंस्ट्रक्ट करेंगे या डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें शियर स्ट्रेस के ओरिएंटेशन को कंसिडर करते हैं। शियर स्ट्रेस यदि क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो वह पॉजिटिव लिया जाएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो उसे नेगेटिव लिया जाएगा। टाउ एक्स वाई की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है शियर स्ट्रेस ऑन एक्स वाई प्लेन इन वाई डायरेक्शन, और वहीं पे टाउ वाई एक्स की बात करें तो शियर स्ट्रेस ऑन वाई एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। टाउ एक्स वाई सबस्क्रिप्ट में एक्स फेस को रिप्रेजेंट करता है और वाई डायरेक्शन को। यदि हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन तो साइन पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे। A shear stress is positive when directions associated with its subscript are plus plus or minus minus। मीन्स यदि प्लस प्लस है यानी कि प्लस फेस है और प्लस डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव लेंगे, या नेगेटिव फेस है नेगेटिव डायरेक्शन है तो प्लस लेंगे। दूसरा केस क्या है कि द स्ट्रेस इज नेगेटिव व्हेन डायरेक्शन आर प्लस माइनस और माइनस प्लस। बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात आ जाती है अब रोटेशन ऑफ प्लेन की। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। चूँकि यह 2D केस है तो 2D केस होने की वजह से इसमें एक एक्सिस को, चाहे हम एक्स एक्सिस ले लें या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, किसी एक एक्सिस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, हम अपने इजी के लिए हमेशा जेड एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं। तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन था वह एक्स ना होकर के एक्स डैश बन जाता है, और वाई जो होता है वाई डैश पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। अब हम कंसीडर करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट को जो थीटा डिग्री पे कटा हुआ है। जब सिग्मा एक्स लग रहा था तो उस फेस का एरिया था ए, लेकिन जब ये थीटा डिग्री पे रोटेट हो गया तो इस टाइम इंक्लाइंड फेस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। चूँकि ये थीटा डिग्री पे है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डेल्टा ए की वजह से, तो डेल्टा ए कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा डेल्टा ए साइन थीटा। अब कंसीडर करते हैं दूसरे पिक्चर को। यहाँ पे तीनों फेसेस पे लग रहे फोर्सेस को प्रेजेंट किया गया है। फोर्सेस बराबर होते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। अब होगा आपको कन्फ्यूजन कि ये कैसे लग रहे हैं और कैसे रिजॉल्व किया गया है, तो हम इसको समझेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए देखते हैं। फॉर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट लेट अस कंसीडर फेस ए बी एंड बी सी। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे जो छोटा सा इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा एंगल कैसे बन रहा है इसको बताया गया है। अब यहाँ पे आप एनिमेशन शो हो रहा है, एनिमेशन में भी देखने की ज़रा कोशिश कीजिए। यहाँ पे सिग्मा एक्स नॉर्मल टू द फेस ए बी है जो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में है। चूँकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन थीटा डिग्री रोटेट होने की वजह से एक्स डैश में कन्वर्ट हो गया है, तो हम जो भी कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल, अब एक्स तो रहा नहीं, अब एक्स डैश में कन्वर्ट हो गया है, तो हम जो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे वह एक्स डैश डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट वाई डैश डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन वाई डैश में कंसीडर करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे सिग्मा एक्स कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेस
AC के जो इंक्लाइंड प्लेन है उसी के पैरेलल एक लाइन PQ दिया गया है। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई वर्टिकली डाउनवर्ड फेस BC पे एक्ट कर रहा है जो लाइन PQ से थीटा डिग्री पे है। अब हम x डैश डायरेक्शन में या x डैश एक्सिस की यदि हम बात करें तो सिग्मा x की वजह से यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सिग्मा x कॉस थीटा और सिग्मा y साइन थीटा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा सिग्मा y का। नाउ shear stress components in x dash direction. Here you will see tau xy on the face AB acting downward along the face AB and tau xy along the face BC. You will see at face AB tau xy makes an angle theta from the inclined surface AC. Shear stress tau xy acting on the face AB. In the x dash direction it will be vertical component and value is tau xy sin theta. Similarly on the face BC it will horizontal component tau xy cos theta. Now again normal stress components in y dash direction. Due to sigma x which is acting on face AB, in y dash direction it will vertical component and the value is sigma x sin theta. Similarly at face BC, due to sigma y in y dash direction, negative y dash direction, it will sigma y cos theta. Let us consider shear stress tau xy components in y dash direction. Consider face AB where tau xy acting downward vertically and theta with inclined face AC, and it will horizontal component in negative y dash direction and the value is tau xy cos theta. Similarly at the face BC, tau xy acting towards negative x direction and it will vertical component in y dash positive direction and the value is tau xy sin theta. Oblique face is denoted by del A. The area of the vertical and horizontal faces are respectively equal to del A cos theta and del A sin theta. It follows that the forces exerted on the three faces are shown in the figure. There is no forces are exerted on the triangular faces of the element since the corresponding normal and shear stresses have all been assumed equal to 0. Using components along the x dash and y dash axis, we can write the following equilibrium equations. Means this suggests that for equilibrium the sum of all the algebraic forces will equal to 0. Let us consider at face AC inclined plane sigma x dash del A in the positive direction and similarly at face AB in the negative direction sigma x del A cos theta into cos theta minus tau xy del A cos theta into sin theta due to shear stress, and at the face BC due to sigma y minus sigma y del A sin theta into sin theta, and due to shear stress tau xy it will tau xy del A sin theta cos theta equal to 0. And similarly in vertical direction y dash direction, summation of all the algebraic forces will be equal to 0 for the equilibrium equation. Fy summation of Fy equal to 0 means tau xy del A plus sigma A del A cos theta sin theta
minus tau xy del A cos theta into cos theta minus sigma y del A sin theta into cos theta plus tau xy del A sin theta into sin theta equal to 0. According to Cartesian coordinate, in the positive direction it will be taken positive and in the negative direction it will be taken in the negative. Solving the first and second equation, we will get sigma x dash and the second for shear stress tau x dash and y dash. The inclined area del A will be cancelled out. After simplifying, we can obtain easily sigma x dash equal to sigma x cos square theta plus sigma y sin square theta plus tau xy sin theta dot cos theta 2 times. Again, tau x dash y dash equal to minus in brackets sigma x minus sigma y into sin theta dot cos theta plus shear stress tau xy cos square theta minus sin square theta. Again, consider the trigonometric relationships. Sin 2 theta equal to, it will 2 sin theta dot cos theta and cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. After resolving this, cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta over 2 and sin square theta will equal to 1 minus cos 2 theta over 2. Now again, sigma x dash equal to, in the place of cos square theta we can assume 1 plus cos 2 theta by 2 plus sigma y 1 minus cos 2 theta by 2 and tau xy sin 2 theta. After simplifying, we can see that sigma x by 2 plus sigma x cos 2 theta by 2 and sigma y by 2 minus sigma y cos 2 theta by 2 plus tau xy sin 2 theta. After simplifying, we see that sigma x dash equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Again, consider the equation 7.2 tau x dash y dash means shear stress at the inclined plane at the theta angle, and it has the value minus in bracket sigma x minus sigma y sin theta dot cos theta plus tau xy cos square theta minus sin square theta. It will be converted into tau x dash y dash equal to minus sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta, because cos square theta minus sin square theta equal to cos 2 theta and sin theta dot cos theta. This suggests that if we multiply it in the numerator and denominator by 2, we can get easily sin 2 theta means sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta. Okay. The expression for the normal stress sigma y dash is obtained by replacing theta in the equation 7.5 by the angle theta plus 90 degree, because we was taken the cubic element and at the edge of the cube it will take 90 degree. If I rotate theta degree, it will shift theta plus 90 degree. So it is theta plus 90, that is y dash axis forms with the x axis, since cos 2 theta plus 180 degree means minus cos 2 theta and sin 2 theta plus 180 degree will equal to minus sin 2 theta. We can replace easily and we can get the value of sigma y dash. This is the sigma x plus sigma y by 2 minus sigma x minus sigma y by 2 into cos 2 theta
minus tau xy sin 2 theta. Since sigma z and sigma z dash was 0, we thus verify in this case the plane stress that the sum of the normal stresses exerted on the cubic element of material is independent of orientation of that element. Two-dimensional stress analysis. This is a two-dimensional object where we have to do stress analysis, and stresses acting on boundary of this object are a normal stress along x direction sigma x and another normal stress along y direction sigma y. Finally, shear stresses on 4 planes of the body tau xy. Now in a stress analysis, what you have to determine is stress at any plane inside the body. Plane can be this or this, anything like this. You have to find a plane which is angle theta with vertical, the dotted line, and you want to know what's the shear stress and what's the normal stress at this plane. Well, you could evaluate these two quantities using simple force balance, but that method will be too tedious for engineering problems. Most effective and easy method for this purpose is one graphical method known as MOHR'S CIRCLE analysis. Let's see how we can use MOHR'S CIRCLE analysis to solve this problem. First step in MOHR'S CIRCLE's method: draw two axes. One is for normal stress, that is horizontal, and another for shear stress, that is vertical. A positive direction of axes are shown here, and negative will be in opposite way. Second step, mark normal stress values you have a problem over the horizontal axis. Means you have got two normal stress values for this particular problem. So mark values of that over here. And please note the sign convention. If stress is tensile in nature, then we should mark in positive axis, and if it is compressive in nature, we should mark it in negative axis. And for this problem, both the stresses are tensile, that's why we mark it on positive axis. Now the third step, draw shear stress values parallel to the vertical axis, start from the already marked normal stress values. And about sign convention of shear stress values, if shear stress tends to rotate that body in clockwise direction, then it will be drawn as positive value, and if it is trying to rotate the body in anti-clockwise direction, it will be marked as negative value. And in our problem, on y plane, shear stress was trying to rotate the body in clockwise direction, that's why I marked it in positive way, and opposite is true for other case. Now the fourth step, draw a line connecting end of shear stress lines, like this. Now the final step of MOHR'S circle construction, draw a circle assuming that the newly drawn line is diameter of a circle. So it will be like this, and this circle will be known as MOHR'S circle. A MOHR'S circle represents complete stress state of a two-dimensional object. Means on periphery of the circle you can locate shear stress and normal stress value of a two-dimensional object. So back to our basic problem. We want to find out shear stress and normal stress value at a given plane inside a body. And one thing to remember, angle in MOHR'S circle is always doubled compared to the actual case. If this is your actual case where you have to find stress values at angle theta, then in MOHR'S circle analysis the angle will be doubled. It will be 2 theta, and starting line of this angle should be the newly drawn diameter line. And you know, peripheral values of this circle will give normal stress and shear stress values. So at this given theta, this will be the peripheral value, so we can easily locate normal stress and shear stress like this. This is normal stress at this angle, and this is shear stress at this angle. Now the information designers wanted maximum normal stress and maximum shear stress values, and you can easily note from this MOHR'S circle that normal stress is maximum at this point. So this will be a principal stress value, and this plane will represent principal plane. It will be denoted like this. We are denoting it by sigma 1, and maximum principal stress is on this plane, and about angle of the principal plane. If we take half of this angle, that will be the angle of principal plane in actual body. And you can also note that at this location normal stress is minimum. So this is again a principal plane, more precisely minimum principal plane. And one thing to note here is that angle between maximum principal plane and minimum principal plane is 180 degree in MOHR'S circle. So in actual case it will be 90 degree as shown in this figure. And if this system has to be in equilibrium, there should be equal and opposite stresses to balance this force. So the complete principal stress diagram will look like this, like a square, where these two stresses and these two stresses balance each other. And one interesting thing to note here, if we check shear stress values at principal plane, you can note shear stress values are zeros over there. Means on principal planes shear stress doesn't exist. Now design a second requirement, maximum shear stress value. You can easily note that maximum shear stress occurs at this point, and this will be maximum shear stress value. So it will be represented like this. Here it is. And
value of this shear stress will be same as radius of the Mohr circle, and you can easily represent it like difference between sigma 1 minus sigma 2, that will be diameter of the circle, and by 2, so radius of the circle. This is all about two-dimensional analysis, so let's move to the 3D problem.